पहला काम इमरान खान की हुकूमत ने ये किया कि सीपेक के मुआहिदों की तफसीलात IMF के साथ शेयर कर दी, जिस पर चीनी खुश नहीं थे और चीनी नहीं चाहते थे कि ये तफसीलात IMF या मगरबी इदारों के साथ शेयर हों। Last year, when Pakistan was readying to join IMF, there were some statements from US administration regarding CPAC. And in the same year, that is 2018, your chief economist has warned Pakistan that you must have to be careful in dealings. What were those points that the IMF wanted Pakistan to be careful with? Some details been shared with IMF. Sure. Yeah, we have information on this project in order to compute what we call the debt sustainability analysis of the country of Pakistan. We also have been alerting the government in certain circumstances that it's important also to make sure that all of these projects in the medium term or even sometime long term are going to be geared to improve exports and to improve economic activity in order to make sure that is bringing a whole benefits to the country. अमेरिका का एक कोई थिंक टैंक है, उन्होंने ये रिपोर्ट की और उन्होंने कहा कि सीपेक जो है इसकी जो मालूमात है वो कोई मिलती ही नहीं, कोई खुफिया कर्जे हैं इस सीपेक के अंदर। जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी और उन्होंने हमसे वो इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। So why doesn't the Pakistani public know the price for CPEC's most expensive project or how it's being determined? On debt, what are the long-term effects in Pakistan of Chinese financing practices, and what are the burdens that have fallen on the new government to manage, with an estimated $15 billion in debt to the Chinese government and another $6.7 billion in Chinese commercial debt? Because it's clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or guaranteed profits for Chinese state-owned enterprises that are repatriated to China. Now, together with non-CPEC Chinese debt payments, China is going to take a growing toll on the Pakistan economy, especially when the bulk of payments start to come due in the next 4 to 6 years. Even if loan payments are deferred, they're going to hang over Pakistan's economic development potential, hamstringing Prime Minister Khan's reform agenda. On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption, resulting in an even heavier debt burden for Pakistan. फिर सीपेक से मुतालिक बाज़ वज़रा ने G2G प्रोजेक्ट्स के बारे में मुतनाज़ बयानात दिए। मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है उस प्रोजेक्ट की तफसीलात, जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान। 259 बिलियन का जो कंपनी खुद फिजिबिलिटी बनाती है, जिसके साथ 2013 में तय हो चुका है कि प्रोजेक्ट आपका हो गया, 2015 में बिडिंग करते हैं और बिडिंग में उसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसके साथ 2013 में इन्होंने MOU किया होता है। भाई, आपने 60-70 अरब का मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, ये लोग तो अब आज तक जेल के अंदर होने चाहिए थे। एक वज़ीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कुछ अरसा के लिए सीपेक पर काम मुअत्तल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान